चैनल टेक्निकल दीक्षा। आज मैं आपको M3 फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज जनवरी 2015 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं द टू टाइप ऑफ फाइल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग इन VSAM फाइल आर सी। नेक्स्ट, इन ए मल्टी लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन A. Next, asterisk PTR ++ is equivalent to D. Next, declaration of this function is A. Next, the output of following program would be D. Next, an example of hierarchical data structure is C. Next, the do while looping statement C. Next, which of the following is not a proper storage class in C? B. Next, the average number of comparison is sequential search is D. Next, tell whether the following tree is B. चलिए अब ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। पहला लेते हैं A command that lets you change one or more fields in a record is lookup. False. Next, in relational schema, each tuple is divided into fields called relations. False. Next, the best average sorting behavior is shown by merge sort. True. Next, the data structure that is needed to convert infix notation to prefix notation is graph. False. Next, the best case and worst case time for searching an element using linear search is 1, n. True. Next, forest is a set of n greater than equal to 0 disjoint trees which are obtained when root is removed. True. Next, PERT graph is a graph used to perform PERT calculation. False. Next, priority queue is a queue that is used to store priority data. False. Next, a symmetric digraph is a directed graph such that for every edge VW there is reverse edge WV. True. Next, maximum degree in any vector in a graph with n vertices n-1. True. चलिए अब मैचिंग में आ जाते हैं। पहला लेते हैं null pointer is F. Next, number of operators required in ternary operators G. Next, null micros is J. Next, a direct SS file is A. Next, seek time is L. Next, a function that changes state object is called C. Next, format command is in DOS is used to establish D. Next, scope of a variable is E. Next, a self-referential structure is H. Next, size of a pointer in small memory model is B. चलिए अब FIB में आ जाते हैं। पहला लेते हैं an example of volatile memory is E. Next, the dash operator is true only when both the operands are true. F. Next, Linux is an example of D. Next, by default a real number is treated as, इसका आंसर डबल होगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। नेक्स्ट, हेडर फाइल इन विच null micro is defined is G. Next, memory that can be allocated in a single call to micro is K. Next, total number of comparison in bubble sort is, इसका आंसर भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका आंसर होगा
n ब्रैकेट में n-1/2. Next, arranging pack of cards by picking one by one is an example of I. Next, all pair shortest path problem can be solved by L. Next, avoid the use of dash statement in the program. N. सो फ्रेंड्स, आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और भी ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.